Hello everyone, my name is Anu and today we'll start the very first lesson of class 3 E.V.S. It's Poonam's day out. Well students, Poonam is a girl who is having fever and she's at home for the last 2-3 days. And there she saw many animals around her home, on the trees, near the pond. Okay, and this chapter is about animals and their habitat, right? So let's start. And these are the teaching learning outcomes. Children will be able to identify different animals. They will be able to categorize them into different groups. They will be able to solve crossword puzzles about animals, birds, insects, etc. Right? So now let's start the lesson. Well, this lesson, Poonam's day out. Observe the surroundings. Okay, now what are surroundings? Surroundings are the area around you, right? The environment, the area around you is called a surrounding. Now here, first Poonam is observing the surroundings, right? जो पूनम है, जो गर्ल पूनम है, she is observing or she is watching carefully the surroundings, means वो अपने आसपास का एरिया बहुत अच्छे से देखती है और वहां पे रहने वाले जानवरों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, सबको अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है. ओके, अब क्या होता है? Poonam had fever and did not went school for 2-3 days. While she was out, she observed many animals around, like animals on the tree and animals around the pond, right? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पूनम को 2-3 दिन से फीवर है और वो स्कूल नहीं गई है, और जब वो घर पे है तो वो ऑब्जर्व कर रही है अपने आसपास रहने वाले एनिमल्स को, चाहे वो ट्रीज पे रहते हैं या चाहे वो पॉन्ड के पास रहते हैं. ओके, पॉन्ड यू नो ना, पॉन्ड इज what is a pond? It's a like कोई भी छोटा तालाब we can say. Okay, that is pond. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I'm getting bored, said Poonam. But you still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied Ma. अब पूनम बहुत बोर हो गई है, 2-3 दिन से घर पे है, तो वो कहती है कि माँ मुझे स्कूल जाने दो, मैं बोर हो गई हूँ. पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी भी फीवर है, इसलिए तुम बाहर जाओ और जाके कॉट पे लेट जाओ. व्हाट इज कॉट? कॉट इज अ बेड, चारपाई. ठीक है. नाउ पूनम फेल asleep on the cot. Suddenly something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no! Whose mischief is this? Is it the crows or the pigeons? It seems it's the crows. Now here, Poonam was sleeping on the cot. Now, अचानक से क्या होता है कि उसके फेस पे कुछ आके गिरता है. जब वो टच करती है अपने चीक्स को तो उसको लगता है कुछ स्टिकी सा उसके फेस पे आके गिर गया. कई बार आपने भी देखा होगा ना, हो सकता है आपने फील भी किया हो कभी कि कभी आप जा रहे हो कहीं रास्ते से कि ऊपर से कोई बर्ड आपके ऊपर शिट कर देता है, राइट? तो ऐसे ही पूनम को अपने चीक पे फील हुआ. तो जब उसने टच किया तो उसने कहा अरे नहीं, ये किसने किया? हो सकता है किसी क्रॉ ने किया हो या किसी पिजन ने किया हो, और मुझे ऐसा लगता है किसी क्रॉ ने किया है, राइट? देन व्हाट हैपेंस? पूनम लुक्ड अप. शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री. Which animals can you spot on the tree in the picture? Write down their names. Now Poonam looked up, उसने ऊपर देखा, because she was lying under a tree ना, वो एक ट्री के नीचे लेटी हुई थी कॉट पे. तो उसने ऊपर देखा, उसको बहुत सारे एनिमल्स दिखे ट्री पे. ठीक है, अब आप देखिए, उसने ये वाली पिक्चर देखी. ठीक है, जब उसने ऊपर देखा तो उसको ये सीन दिखा. अब नाउ यू हैव टू find out the animals and you have to tell me the names also. Can you see the animals, children? Yes. Now tell me, which animal do you see?
Yes, there are so many animals like pigeon, squirrel, crow, monkey, butterflies, sparrow, cuckoo, ants, and parrot. Right? So she saw so many animals on the tree. Then what happens? Poonam picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. But her cheek was still sticky. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. Now Poonam, she picked up a leaf from the ground. उसने एक leaf उठाई और उसने अपना गाल clean किया. But it was not yet clean. Okay, it was still sticky. So she thought that let me go to the pond nearby and wash my face. तो फिर वो पास वाले पॉन्ड में अपना फेस वॉश करने के लिए चली गई. नाउ अब वो जब पॉन्ड के पास गई तो वहां पर भी उसने कुछ एनिमल्स देखे. कुछ पॉन्ड के अंदर थे, कुछ पॉन्ड के अराउंड थे, उसके आसपास थे. Which animals did Poonam see at the pond? Look at the picture and write their names. And now see, children, this is the picture. And now here you have to find out the names of the animals you can see in this picture. Right? So what are the animals? Which are the animals that you see? Can you tell me the names? Yes? Yes. So I can see goat, tortoise, crane, buffaloes, frogs, and a stork. Right? Now, so these are the animals that she saw near the pond. Okay. So now you must have understood, students, that which animals live on trees, which animals live in the water or in water and around the water. Right? So, can you act like the animals seen at the pond? Which animal makes what kind of sounds and movements? Try to make similar sounds. So यहाँ पे वो कहते हैं कि जो एनिमल्स जो पॉन्ड के आसपास एनिमल्स देखे वो किस तरह से मूव करते हैं. हाँ, किस तरह से वो चलते हैं, कौन चलता है, कौन हॉप करता है और किस तरीके की साउंड्स वो निकालते हैं. क्या आप निकाल सकते हैं? जैसे गॉट कैसी साउंड करती है, मैं लाइक दिस. फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग क्रॉक क्रॉक करता है. And buffalo grunt करती है. Right? So these and likewise other animals also make sounds. Right? Now you can see there are, अब तक आप ये समझ गए होंगे that there are 3 types of animals we can say in general. Like कुछ जो एयर में उड़ते हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं, कुछ जो लैंड पे रहते हैं. लैंड पे रहने वाले एनिमल्स में मैमल्स भी होते हैं. हाँ, जो बेबीज को बर्थ देते हैं, जो बेबीज को पैदा करते हैं और उनको हम बोलते हैं मैमल्स. ठीक है. कुछ लैंड पे रहने वाले एनिमल्स भी होते हैं, कुछ वाटर एनिमल्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो लैंड के अंदर ब्यूरोज में, राइट, जैसे लाइक रैबिट लिव्स इन अ बरो. राइट. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बट जनरली mainly we have divided them into 3 parts like air, land and water animals. Right, like transport. Okay, so I'm showing you picture of some water animals. You must have seen all these water animals like hippo, it's a sea lion, walrus, okay, and weavers, penguins, sea snake, turtle, gharial, frogs. Like these, there are a number of water animals are found. Then the wild animals, okay, that animals that live in jungle like giraffe, fox, tiger, chimpanzee, squirrel, chipmunk, camel, possum, lion, porcupine, right? So likewise, so many other animals are also found, which are animals, those who live on land. Then the birds, okay, so many kind of birds you can see around you. Right. Now, different animals move in different ways to go from one place to another. Some animals walk, some crawl, some fly, and some swim. For this, some animals use their feet,
some use their wings, some animals even take help of their tail, right? So now you must have seen many animals too. Now write which of them can fly, crawl, walk, hop and have wings, feet and tail. ठीक है, यहाँ पे आपको नेम्स बताने हैं उन एनिमल्स के जो फ्लाई कर सकते हैं. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई? All the birds can fly, right? Like crow, sparrow, parrot, cuckoo. Only kiwi is the bird which cannot fly. Okay. Now can crawl, turtle, lizard, crocodile. Can walk like goat, buffalo, cow, horse. Can hop like frog, rabbit, kangaroo. Have wings like parrot, sparrow, eagle. Have feet like cow, buffalo, bear, ox. Have a tail like monkey, cat, cow, rat, right? So these are the animals with different features. Now this is animals live in different places. Okay, now some animals live on the trees, some in water, some live on land, some live under the ground, and some fly in the sky. Some animals even live in our houses, है ना? So they, आप जानते हैं, जैसे हमने अभी आपको दिखाया, कुछ लैंड पे रहते हैं एनिमल्स, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ वाटर के अराउंड रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं, कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं, है ना? कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्नेक और रैबिट्स, राइट? So यहाँ पे you can see a picture. Now look at the picture given below. Color the animals that do not live in your house. आपको उनको कलर करना है जो आपके घर में नहीं रहते. हॉर्स रहता है आपके घर में? नो. डॉग रहते हैं? यस. हैन रहता है? हाँ, कुछ घरों में हैन रहते हैं. ईगल रहता है? नो. रैट, सॉरी, दिस इज अ कैट. कैट भी रहती है क्या? एंड व्हाट इज दिस? कैमेलियन रहता है वो? गिरगिट? नो. एलिफेंट रहता है आपके घर में? नो. देन स्वैन और द डक? नो. फिश sometimes, yes. Those who have the fish tank at home, they can say yes. Then mosquitoes, yes. Rat, yes, in some houses. Then lizards, yes. And cockroach, yes. So you have to color those. You have to color those that do not live in your house, जो आपके घर में नहीं रहते. Okay. Let's see next. Okay, so here I have written the names of the animals that do not live in your house: horse, hen, eagle, elephant, duck, and chameleon. Next. Now here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names below. So these are dog, fish, and cockroach. Okay. Okay, now this is a very interesting exercise, students, activity. Here, this is a puzzle or a crossword, we can say, in which you have to find out who am I. Okay, I will tell you about myself, or the clue is given like I am this, and you have to find out that who am I. Find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. Like, banana is what I love eating. Okay, this is all about animals only, as this chapter is about animals. So the first clue is that banana is what I love eating. कि banana मुझे बहुत पसंद है. I spend my time jumping and leaping. और मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करता हूँ? जंपिंग करके और लीपिंग करके, मतलब जंप, कूदता हूँ, झूलता हूँ, और मुझे बनानास बहुत पसंद है. अब बताइए कौन हूं मैं? So the answer is already given. It is monkey. You know ना students that monkey loves banana. Monkeys को बनाना बहुत पसंद होता है और वो सारा दिन जंप करते रहते हैं, इधर उधर लीप करते रहते हैं, झूलते रहते हैं टहनियों पे, राइट? ट्रीज की ब्रांचेस पे. Yes. Okay. Now let's see the second puzzle. On the walls, webs I weave, where insects
insects stick and cannot leave. वो कहता है कि मैं दीवारों पे जाले बना देती हूँ और उन जालों में इंसेक्ट्स चिपक जाते हैं और फिर छूटते नहीं हैं. अब आप बताइए कौन है वो, कौन बनाता है दीवारों पे जाले? Yes, spider. So now you have to circle in the crossword spider. Good. Let's see next. I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. कि मैं सारी रात जागता हूं और दिन में सोता हूं. कौन है बताओ जो सारी रात जागता है? It is an owl. Yes. So circle owl. Next, croak, croak, croak is my sound. In water or on land I am found. अभी देखो मैंने आपको बताया था क्रॉक किसकी साउंड थी? फ्रॉग की. यस. और वो पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है. ठीक है. सो नाउ सर्कल फ्रॉग. नेक्स्ट, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल. हैव नो फीट सो आई क्रॉल. वो कहते हैं जब बारिश होती है उसके बाद मैं निकलता हूं और मेरे पैर नहीं होते इसलिए मैं क्रॉल करता हूं, रेंगता हूं. अब बताइए कौन निकलता है? स्नेल. यस. सो सर्कल स्नेल. नेक्स्ट इज स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस. आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस. नाउ टेल मी कि मैं बहुत ही धीरे धीरे चलता हूं, बहुत स्लो एंड स्टेडी, और मैं हमेशा जीतता हूं जब भी कोई रेस होती है तो. इट इज टॉर्टॉइज. यस. आपने वो टॉर्टॉइज और रैबिट की कहानी सुनी है ना, कि रैबिट और टॉर्टॉइज में से अंत में कौन जीत जाता है? टॉर्टॉइज. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट स्लो एंड स्टडी. स्लो एंड स्टडी, स्टडी होने के बाद भी, स्लो होने के बाद भी वो रेस को जीत जाता है. कौन? टॉर्टॉइज. Okay, let's go next. Now here students, take a look at the picture. Can you distinguish the thumbprints from the other fingerprints? In the same way, using ink or watercolors, make pictures of animals. Make pictures using your own imagination. Do not copy the ones shown below. You can use the pictures you have made to decorate your house, your school and home. Right? Now see, with the help of fingerprint, इन्होंने fingerprint से, thumbprint से इन्होंने animals बनाए हैं. देख रहे हो आप कितने सुंदर बनाए हैं, है ना? तो आपको भी इसी तरह से अपने फिंगर और थंब का यूज करके इंक से डिफरेंट एनिमल्स बनाने. So this is the activity that you have to do. Now see some word like spider, rabbit, fish. ये भी thumb से ही बनाए हुए हैं, thumb impression और finger impression से. Isn't it beautiful? Yes. So you also will have to make different activities, different pictures, different animals. Okay, now see, now you have one more activity to do, students. Spend some time under a tree, observe the animals carefully, name the animals which can be seen. Now this is the picture. Okay, now can you see some pictures, some animals? Yes. Now you have to name them. Like I can see a rabbit, a goat, a squirrel, a bird and a monkey. I can see a what is this? It's a caterpillar, right? Yes. Is there anything that you can see, students? Okay, now see, on the branches we can see that on the branches what are the animals we can see? Monkey, bird. Okay, now here you have to tell that which animals live on the branches, like sparrow, monkey, crow. On the leaves पे कौन रहता है? Caterpillar, grasshopper and beetle. On the trunk, tree के trunk पे कौन से animals होते हैं? Squirrel and ants. On the ground, which can we see? Rat, rabbit, hare. Right? Around the tree, what we can see? Cow, goat, buffalo. So these animals are generally found at these places. Okay. Now let's see next. Now arrange these animals in the order of their size, smallest being the first.
यानी यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं, आपने क्या करना है, इनको साइज के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में लगाना है, सबसे पहले सबसे छोटा, ठीक है, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो लेट्स सी, सबसे छोटा है एंट्स, फिर बीटर, देन कैटरपिलर, देन ग्रास होपर, देन स्पैरो, देन रैट, स्क्विरल, क्रॉ, rabbit, hare, monkey, goat, cow and buffalo. Okay, so you have to arrange them size wise. Now some more exercises we'll do, okay, to understand more about these animals. Match the animals with their names. Now you can see some animals are there and you have to match them. You can easily do them. Squirrel, where is squirrel? Yes, so like this you will have to match them. Squirrel, sparrow, ant, chameleon, then pigeon, okay, monkey, crow, parrot and butterfly. And you have to tell also that where they live, okay. Next, pick the correct answer. So now here, like a lion mews or roars. What is the sound of a lion? Mews or roars? Yes, it is roars. A dog barks or neigh? Barks. A cat mews or moos? Mews. A frog chirps or croaks? Croaks. A bird chirp or croaks? Chirps. ठीक है, likewise you have to tick the correct answer. Okay, next, write the name of animal which makes sound as given below. Like cow, cow, कौन सा एनिमल बनाता है साउंड? मे मे, कुकड़ू, गुटरगू, टे टे, ढेंचू ढेंचू, कौन से एनिमल्स ये साउंड बनाते हैं? यस, काव काव कौन करता है? क्रो, मे गॉट, कुकड़ुकू कॉक, गुटरगू पिजन, टे टे फ्रॉग, ढेंचू ढेंचू डोंकी। ठीक है, इस तरह और भी एनिमल्स होते हैं जो साउंड निकालते हैं, तो आपको फाइंड आउट करनी है और भी साउंड्स, राइट? इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, नो? ओके, नाउ गिव एग्जांपल्स ऑफ एन एनिमल विद 4 legs. एक एनिमल जिसकी 4 legs होती हैं. देयर आर नंबर ऑफ एनिमल्स हु हैव 4 legs. ओके, आपको अपने आप से उनके नेम्स लिखने हैं. एन एनिमल विद लॉन्ग टेल, जिसकी लंबी टेल होती है. यस, एन एनिमल विद 1 horn, जिसका एक हॉर्न होता है. एन एनिमल विद स्ट्रॉन्ग ट्रंक, जिसकी लंबी सी सूंड होती है, स्ट्रॉन्ग सूंड होती है, ट्रंक होती है. यस, एलिफेंट, वेरी गुड. So now here I have written it. Okay, you can write an animal with 1 horn is rhino. Animal with long tail, monkey. 4 legs, lion, buffalo, cow. So many animals are there, right? Okay, now let's see next. Okay, here you have to tell that which one is there. A beautiful bird with blue, green, long feathers. It's a peacock. Okay. An animal with shell on its back. It's a turtle or tortoise. Okay, good. Now let's see the next exercise. It is classify the following animals as mammals, birds, insects and reptiles. So students, let me tell you that mammals are the one who give birth to young ones. Mammals कौन से animals को कहते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं. और मतलब जो अंडे नहीं देते, वो सीधा बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स. ठीक है, और बर्ड्स कौन से होते हैं? जिनके विंग्स होते हैं, जो उड़ते हैं. उड़े ना भी, उनके विंग्स भी अगर होते हैं तो दोज आर बर्ड्स, और वो अंडे देते हैं. बर्ड्स कौन होते हैं? जिनके विंग्स होते हैं और जो अंडे देते हैं, हु ले एग्स. इंसेक्ट्स कौन होते हैं? जिनके 6 feet होते हैं, 6 पैर होते हैं जिनके, उनको बोलते हैं इंसेक्ट्स. और रेप्टाइल्स वो होते हैं जो क्रॉल करते हैं, बेशक उनके पैर हों पर वो क्रॉल करते हैं. क्रॉल कैसे होता है? रेंग के चलना, घिसट घिसट के चलना. ठीक है, तो आप ये जो एनिमल्स लिखे हुए हैं, आपने इनको कौन से मैमल्स हैं, कौन से बर्ड्स हैं, कौन से इंसेक्ट्स हैं, कौन से रेप्टाइल्स हैं, ये बताना है. जैसे काउ. काउ क्या है? काउ इज अ मैमल. आप देखा, काउ बच्चे पैदा भी करती है और दूध भी देती है, राइट? स्नेक. स्नेक क्या है? स्नेक इज अ
रेप्टाइल, क्योंकि आपने देखा स्नेक क्रॉल करता है। यस, बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट। ओके, एंड लेपर्ड क्या है? लेपर्ड के 4 पैर होते हैं, वो भी बच्चे पैदा करता है, इट्स अ मैमल। ठीक है, लाइकवाइज आई हैव डन इट फॉर यू दिस। ओके, you also find it out and fill them correctly. Next, where will you find these animals? इन animals को आप कहाँ, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ग्रास होपर, वेस्प, बटरफ्लाई, लेडी बर्ड, कहाँ पे मिलते हैं यूजुअली? ये ट्रीज पे मिलते हैं ना, लीव्स पे। यस, काउ, बफेलो, गॉट, शीप, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? यू विल फाउंड देम ऑन लैंड। ओके, लायन, एलिफेंट, जीब्रा, वुल्फ आपको जंगल में मिलेंगे। फिश, टैडपॉल्स, वाटर स्नेक आपको पानी में मिलेंगे, इन वाटर। स्क्विरल, मंकी, क्रो, स्पैरो ये ट्रीज पे मिलेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू टेल दैट वेयर you will find these animals. Next, a pond is a place in a village where animals come to drink water. So tick the animals which you can see near pond. तो आपको पॉन्ड के आसपास कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं, यू हैव टू टेल। और पॉन्ड क्या होती है? एक ऐसी प्लेस होती है विलेज में जहां पे एनिमल्स पानी पीने के लिए आ सकते हैं। सो आप कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं? काउ, बफेलो, क्रेन, टर्टल, गॉट, डोंकी, डॉग, डक, फ्रॉग। ठीक है, ये एनिमल्स आ सकते हैं पानी पीने के लिए। लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ डू दीज एनिमल्स मूव? आंसर इन वन बुक। अब ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? लाइक एक स्पैरो कैसे मूव करती है? अ स्पैरो कैन फ्लाई। स्नेक क्या करता है? स्नेक क्रॉल करता है। अ फ्रॉग हॉप्स, ठीक है, हॉप करता है। अ फिश इट swims, and a horse can walk or run, right? So this is how these animals move. Now this is an activity for you students. Like I have already told you that you have, with the thumbprint and fingerprint, you have to draw a parrot and a butterfly and some other animals too, whichever you like. Okay, and using one of your palm, draw a beautiful peacock as shown below. जैसे देखो, आपने हथेली, आपने क्या किया? अपना पाम मीन्स हैंड, हथेली, उसको रख के उसको ड्रॉ किया है और उसके बाद उसको एक ब्यूटीफुल सा पिकॉक बना दिया है ना? सो लाइकवाइज यू ऑल्सो हैव टू डू दिस एक्टिविटी. ओके, यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन स्टूडेंट्स, एंड आई हैव अ जिगसॉ पजल ऑल्सो फॉर यू. जिगसॉ पजल क्या होती है कि एक पजल को या एक पिक्चर को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है एंड बाद में हमको उनको ज्वाइन करके वो पिक्चर बनानी होती है. अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, देखो, एक दैट अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर. अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट, कौन सा टुकड़ा कहाँ पे आएगा. तो हम इस वाले पजल को सॉल्व करें. देखते हैं किस चीज की पिक्चर थी ये. Yes, after putting the pieces together, see what picture it is. It is the picture of Tom and Jerry. Yes. So that's it, students. This was the poem. Thank you so much for watching the video. Stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning. And don't forget to subscribe my channel. Okay. Bye-bye.